So now come to the concept number 5. The concept number 5 of physical world is unification of force. I think it is the great advancements in the physics. It's one of the great achievement of physics that we could relate, we could unify, different concepts and different domains into a single concept. And many scientists were there who actually worked on this concept. I will be starting with the Newton. If I will take the Newton, he unified the celestial and terrestrial domain by applying law of motion and gravitation. When you will be relating the Newton's law of gravitation and Newton's law of motion to both, the astronomical objects as well as to the terrestrial objects, and you are getting the same result, then this is basically the main advantage of Newton, that he could unify both the concept. जहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स लगाने थे वहाँ पर उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया. ही इवन डेवलप्ड द टेलीस्कोप आल्सो फॉर दिस रीजन. सो यहाँ पर हमारे पास में सेलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल दोनों डोमेन्स को एक साथ करना जो इम्पॉसिबल था, न्यूटन could able to done this concept. That's why again he is the pioneer in the field of the unification of force also. Then it comes to Einstein and Faraday, two well-known name in the development of the electromagnetics. They actually related, they actually unified the electric and magnetic concept, and they could explain us what is the main concept of electromagnetism. So they developed the electromagnetism by unified again, by again relating, by again applying unification of different theories of electric and magnetic theories together to develop another branch of physics called electromagnetism, or you usually call it as EMI sometime, or you usually call it as the electromagnetics. This is basically the Einstein and Faraday. तो न्यूटन ने जहाँ पर हमारे को ग्रेविटेशन और इन कंसेप्ट को लेके यूनिफाइड किया, इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस को, आप ये ध्यान दीजिएगा, हम बात फंडामेंटल फोर्सेस की कर रहे हैं. ग्रेविटेशन फोर्स को अगर कंबाइन किया गया है तो न्यूटन के द्वारा, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कंबाइन किया गया है तो ऑयस्टेन एंड फैराडे के द्वारा. सो हियर इट इज, वन इज द न्यूटन कंसेप्ट, द सेकंड वन इज द ऑयस्टेन. After that, it comes to Maxwell. Now, Maxwell is considered to be one of the topmost scientists of the all era, basically, just like Newton, Einstein, Tesla. Maxwell is also having high reputation in the field of physics. What is main contribution? He could able to explain us that light is an electromagnetic wave. Now, very interesting. Optics कहाँ रह गई हमारे पास में? उस ऑप्टिक्स को उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के साथ में रिलेट किया, एंड ऑल द थ्योरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म he could able to explain with help of the all the theories of optics he could able to explain with theory of electromagnetism. So Maxwell gave rise to the unification of electromagnetism and optics. यहाँ एक चीज और ध्यान में रखने की है, Maxwell actually started with all the concepts of electrostatic, electrodynamics, magnetostatic, magnetodynamics, and he gave us the four fundamental equations. उन four fundamental equations की terms के अंदर आगे की सारी theories जो optics की थी वो इसी तरह से लिखी गई. If I'll say that light is nothing but just consists of electric and magnetic vectors, then that is basically given by Mr. Maxwell. Then always a person like Newton is there, Maxwell is there, so another person is Albert Einstein. Albert Einstein could able to relate mass with energy with his famous mass energy relation E equals to mc square. He also unified the motion of space, time and gravitation using the concept of theory of relativity. So his major contribution to the physics is the theory of relativity. Of course, when Newton was explaining the classical physics, at the same moment Albert Einstein was explaining the theory of relativity. Then in the modern world now we have another two names for there, that's called Glacio and Salam. Salam is Abdul Salam, and they could relate weak nuclear forces and electromagnetic forces, and they explain us that electro weak forces, another new concept. He explained that weak nuclear forces and electromagnetic forces are two different types of forces. इनको साथ में अगर हम करेंगे तो हमें एक नई चीज मिलेगी, that's called the electro weak forces. So the first concept is in the unification of forces. हम कई सारे concepts को साथ में करने वाले, यही हमारा मेजर क्वेस्ट था जब हमने दो की बात कही थी, एक यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शन. अलग अलग साइंटिस्ट ने देखिए कितना सारा काम किया, न्यूटन, ऑयस्टेन एंड फैराडे, देयर आर सो मेनी. ये तो सिर्फ एक कुछ एग्जांपल्स हैं. मैक्सवेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, एंड यहाँ पर हमारे पास में मेन कंसेप्ट में ये बात बतानी है that हम यूनिफिकेशन वी आर अप्लाइंग
in classical physics also, we are applying it in relativity also, and we are applying it in quantum physics also. So in all related phenomena, all the branches of physics, we have the concept of unification of forces. They are counterpart of, they are actually the related to the physics, and all the fundamental theories of physics can be related with each other. The concept of unification of different theories and domains is nothing but just called the unification of forces. Now we will be with the last concept of your first lesson, physical world. That's the nature of physics laws. You know, we can broadly classify physical quantities into two categories. The quantities which changes with time, they are called the variable quantities. हम टाइम के साथ इनको बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि टाइम के साथ कौन कौन सी क्वांटिटीज चेंज होती है. बट अभी जो हम मेन बात करेंगे वो ये करेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज ऐसी है जो टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहती हैं. दे आर कंसीडर्ड टू बी द कंजर्व्ड क्वांटिटीज. सो यू नो द फिजिकल क्वांटिटीज हैज classified, physical quantities can be classified into two categories: the variable quantity and conserved quantity. All the physics laws can be usually explained in terms of the conserved quantities, and there are four fundamental laws for these conservations called the conservation laws. Four fundamental conservation laws are there. Number one, law of conservation of energy. In any mechanical system, in any isolated system which is away from all the external forces, the total energy of system remains constant. That's called the law of conservation of energy. Number two is conservation of linear momentum. If no external force is applied, then the momentum of system always remains conserved. That's called the conservation of linear momentum. अगर कोई external force नहीं लगाऊं तो system का linear momentum हमेशा conserved रहता है. That's called the conservation of linear momentum. If I'll come to conservation of the angular momentum, again the same thing. If no external torque is applied, then the angular momentum of system always remains conserved. So this is basically for the translatory equilibrium, and this is for the rotational equilibrium. Conservation of linear momentum, momentum constant है. Conservation of angular momentum constant है. With condition, यहाँ torque 0 होना चाहिए, यहाँ force 0 होना चाहिए. And of course, one of the fundamental laws is the conservation of charge also, that the total charge of an isolated system also remains conserved. So all the physical quantities are basically using these four concepts of conservation: law, conservation of energy, conservation of linear momentum, conservation of angular momentum, and conservation of charge. इस बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंजर्वेशन लॉज हैं, इसी की वजह से सिमेट्री आती है नेचर में. इसी की वजह से ऐसा है हमारे पास में that the quantities remain same with space and time. आज अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ लेबोरेटरी में, और अगर मैं 10 दिन बाद उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा तो वही रिजल्ट आना चाहिए. दैट इज बेसिकली द सिमेट्री. आज अगर मैं यहां पर कर रहा हूं और कल को अगर उसको कहीं और जाके भी करूंगा, सेम रिजल्ट आना चाहिए. दैट इज बेसिकली फॉर द स्पेस. सो टाइम भी हमें सिमेट्री शो करता है, स्पेस भी हमें सिमेट्री शो करता है. हम कहीं पर भी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जाकर अगर उन एक्सपेरिमेंट्स को करें तो हमारे फंडामेंटल लॉज फिर से वही आने चाहिए. दैट इज बेसिकली पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन लॉज, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द फिजिक्स. सो द कंजर्वेशन लॉज आर क्लोजली रिलेटेड टू सिमेट्रीज. फिर से ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्री का क्या मीनिंग है? एक जैसे रहने चाहिए. आज किया तो भी, मैंने किया तो भी वही रिजल्ट आए, कोई और आके करे तो भी वही रिजल्ट आए. जब ओम ने ओम्स लॉ किया था तो उसने सेम रिजल्ट लिया था. हमारे बच्चे करेंगे, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, सभी उस लॉ को, ओम्स लॉ के साथ ही अगर चले. न्यूटन्स लॉ ने जब न्यूटन ने किया तो भी F इक्वल्स टू ma था, और हम भी कर रहे हैं तो F इक्वल्स टू ma है. दैट इज बेसिकली द सिमेट्री का कंसेप्ट है. सो ऑल द कंजर्वेशन लॉज आर सिमेट्रिक and they remain same with space and time. That is basically your conservation laws. In these 5 classes, I could able to explain, I think, all the concepts of the physical world. जो पहला यूनिट था हमारे पास में, स्टार्ट किया था हमने फिजिक्स के डेफिनेशन के साथ. अब अगर हम साइंस की बात करें तो ये जो साइंटिफिक थॉट्स, हम किसी को अगर सिमेट्रिक
फॉर्म के अंदर लाते हैं तो हम एक्चुअली साइंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स और साइंस एक साथ आ गए। दरअसल जो साइंस के बेसिक प्रिंसिपल्स थे सारे के सारे आप फिजिक्स के ऊपर लगा सकते हैं। और आपने देखा था इसमें क्या इसका स्कोप है, क्या इसका एक्साइटमेंट है, कौन कौन से इसके ट्विस्ट एरियाज हैं, कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं, क्या कंसेप्ट है यूनिफिकेशन का, एंड लास्ट में क्या कंजर्वेशन लॉज इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। होप सो you enjoyed all the concepts, and I am sure that whenever you will having any doubt, if you will go through my video of the first lesson, I am sure you will able to overcome all your mistakes and all your problems with help of these videos. Thank you very much. I'll see you again with unit first का lesson 2 जो है, that's the unit and measurement. So I'll be there with my next videos with units and measurement things. Enjoy, stay safe, stay healthy और अपना ध्यान रखिए और लगातार फिजिक्स को पढ़ते रहिए। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और नहीं होगा तो हम बना देंगे दरअसल इसमें से। आप मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट लेसन हम जल्दी शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला। थैंक यू ऑल।